Hello students, मैं BL Sharma discussing an activity of the chapter 13, that is statistics of class 10th mathematics, and this is actually a group activity and very simple kind of activity. You people, I think, fear of doing activity. There is no such means problem in doing activities. So very simple activities of the chapters make us understand the chapter. So the in the group activity, what we do and what is our activity? That is to find the mean height of the student of your class on a particular day. Late there is a particular day, and some students are present that day. Then how to find out the mean height, means average height of the student. So this is to find the mean height of the student of my class, that is 10th on a particular day. Then what is material required? Material required is nothing, a sheet of paper, geometry box, adhesive, and etc. 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 आपको ज्यादा कुछ करना उसमें नहीं होता. But and what is prerequisite knowledge? पहले हमें क्या पता होना चाहिए? And that is concept of mean of group data, because number of students are more, or you can say that is the mean value of the class interval is more. So we need the formula of the group data. एंड द फॉर्मूला फॉर ऑफ द फाइंडिंग द मीन का, एक तो मीन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एवरेज होता है, और फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द मीन की कौन से मेथड से आप मीन फाइंड करना चाह रहे हैं, उस मीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. देन व्हाट इज द प्रोसेस? इन द प्रोसेस व्हाट वी डू, स्टूडेंट टू कलेक्ट द हाइट ऑफ देयर क्लासमेट्स बाय एनी टू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. जो आपकी क्लास है उसमें दो स्टूडेंट को आप बोलिएगा कि वो आपकी सारी जो हाइट है आपसे कलेक्ट कर लें. जितने भी प्रेजेंट हो उनकी सबकी हाइट कलेक्ट कर लें, और फिर क्या करें? एंड राइट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड, वॉट एवर इट इज इट इन योर क्लास, जो भी आपकी क्लास में अवेलेबल है, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, उस पे वो बच्चे लिख देंगे. द टू स्टूडेंट्स विल बी कलेक्टिंग द हाइट ऑफ फ्रॉम यू, and they will be writing on the blackboard or whiteboard. And then next is you draw this table. That is actually a serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are total 25 students. उस दिन आपकी क्लास में लेट there are total 25 students. इन दोनों स्टूडेंट ने आपसे हाइट कलेक्ट कर ली है. ये दिस इज ग्रुप एक्टिविटी है, सारे स्टूडेंट मिलके काम करेंगे. इसके अंदर से आपने अपनी अपनी हाइट लिख करके, राइट करके इन दोनों स्टूडेंट को दे दी है, और ये दोनों स्टूडेंट मिलके या और कोई दूसरे स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप ये बोर्ड के ऊपर आपका टेबल बना लें, सीरियल नंबर बना लें. एक्चुअली दीज आर नॉट रोल नंबर्स, बिकॉज सम स्टूडेंट may absent that particular day. So we have written here that total 25 students are here, whether the roll number first, second, third, or whatever it is, it does not matter. अब देखिए हम लिखते जाएंगे. द फर्स्ट जो कलेक्टेड था दैट इज 160 सेंटीमीटर, देन 165 सेंटीमीटर, 154 centimeter, fourth 163 centimeter, then 170 centimeter, 176 सेंटीमीटर. जो भी कलेक्ट की है आपकी हाइट, आपसे पूछ के आपसे, वो ये दोनों बच्चे, दोनों स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे. 175 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर, then 162 centimeter, 153 centimeter, 151 centimeter, then next 157 centimeter, 160 centimeter, 155 centimeter, 164 centimeter, 179 centimeter, and 18th 173 centimeter, 19 159 centimeter, 20 158 centimeter, and then serial number 21 174 centimeter, then 22 155 centimeter, and 23 165 centimeter, and 24 175 centimeter, and the last 25th student, that is 179 centimeter.
The two students of your class, means your classmates, have written these entries, this height of 25 students on the blackboard or whiteboard or green board. हमारा टास्क है कि हमें इनका मीन हाइट फाइंड आउट करना, मीन्स मीन फाइंड आउट करना है. कैन यू कैलकुलेट द मीन हाइट? और इसके बाद में आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी पड़ेगी. देखिए, ये हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे बनाई, और दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द अबव कलेक्टेड डेटा. ये 25 स्टूडेंट है. इसको हम कैसे लिखेंगे? बेटर वे आपके पास है, यू यूज स्टेप डेविएशन मेथड. तो देखिए, इसके लिए पहले हमने एक टेबल बनाई. हाइट इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमने बनाया यहाँ पे. तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मिनिमम हाइट इज 151 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम हाइट इज 179 सेंटीमीटर. तो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे 5 5 का गैप लेके. देखिए, हमने पहले बनाया दैट इज 155, 50 टू 155 सेंटीमीटर. दैट इज 155, 160, 160, 165, 165, 170, 170, 175 एंड 175, 180, और एक लास्ट में टोटल का कॉलम और बना दीजिए, एंड दिस इज टोटल. राइट? खुद को ही बनाना है. देखिए, अब यहां ये देखेंगे कि 150 सेंटीमीटर टू लेस देन 155 सेंटीमीटर, ये 155 सेंटीमीटर इसमें नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज continuous kind of class interval. That is why we have to count 155 in this class. इस क्लास में 150 से लेके लेस देन 155 सेंटीमीटर. फिर से बता रहा हूं, 155 टू लेस देन. देखिए इधर, आप खुद काउंट करिए. दैट इज 150, 150. देखिए, वन, एक तो ये आ गया. टू, 155 नहीं लेंगे. 150 to less than 55. Yes. So how many are these? You can count. One, two, three. So we can put here three. So the height in centimeter in the first class, that is 150 and 155, that is 3. Now, for the next column, next row, sorry, 155, 160 means 155 to less than 160. 155 count करें और 160 से कम तक, less than 160 will be here. So now we can say 155. This is 155. One, two, three, फोर. और देखिए, कोई और हो तो 155 to less than 160. This will not be here, this will go here. Yes, one more is here. No, 160 will go in that. So how many? We can count here. 1, 2, 3, and 4. Sorry, these are 6. Again, we have to count 155 to less than 160. 1, 2, sorry, 2, 3,
4 less than 160. So less than 160, that is 175, 162, 151. This one also. So now we count here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is 155 to less than 160, that is 6. इसी तरह से 160 to less than 165. 160 to less than 165. 161. Then 2, 3, 4, 5. Yes. So how many are these? These are 5. So similarly, we can count and we can write here. I already have counted, so I can write here 165 to less than 170, that is 2. 170 to less than 175, 3 from the above table. And 175 to less than 180, that is 6. और अगर total count करेंगे तो 3 plus 6 plus 5 plus 2 plus 3 plus 6, the total is 25. ये हमारे पास क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ चुका है। तो देखिए, तो हमारा सेकंड जो टास्क होगा अब इसके बाद के अंदर, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू ऑफ द क्लासेस। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ये देखिए, हमने एक टेबल बना ली। राइट, इस टेबल में देखिए, दैट इज एक्स आई मीन्स द मीन वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास 150 प्लस 155, दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2, दैट इज 152.5. Then 155 plus 160 divided by 2, that is 157.5. Then 160 and 165 add and divide by 2, that is 162.5. 165 and 160 को 70 को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, दैट इज 167.5. और वैसे भी देखिए, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो आप नेक्स्ट 5 ऐड करते जाइए। क्लास साइज सेम है, तो दैट विल बी 172.5 एंड दिस विल बी 177.5। ये करने के बाद में, क्योंकि क्योंकि आप देखेंगे ये एक मिड वैल्यू ग्रेटर है, बहुत लार्ज है, और जब ये मिड वैल्यू बहुत लार्ज होती है तो हम जनरली स्टेप डेविएशन मेथड का यूज हमें करना चाहिए। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड के यूज के लिए पहले हमें एक अज्यूम्ड मीन लेना होता है। इसमें से बीच में से कोई हम एक अज्यूम्ड मीन ले लेते, मान लीजिए कि सपोज वी आर टेकिंग दिस एज अज्यूम्ड मीन, सो लेट अज्यूम्ड मीन ए इज 162.5. We are discussing here step deviation method to find out the mean of the given data. So you write down here the formula ui is equal to xi minus a upon h. H here is 5. So मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि whatever you have taken here assumed mean, उसके सामने ui को लिख दीजिए 0. And then previous means उसके जो preceding column write ui minus 1. Its preceding column you write here minus 2. लेकिन इसके बाद में succeeding you write 1, you write 2 and you write 3. ये हमने ui find out यहाँ पे कर लिया है। Next column is fi into ui. This is fi. This is fi is 3 and ui is minus 2. So 3 minus 2, that is minus 6. 6 into minus 1, that is again minus 6. 5 into 0, that is 0. 2 into 1, that is 2. 3 into 2, that is 6. 6 into 3, that is 18. अब इनका जो fi इंटू ui है, इनका हम सम करेंगे। -6 और -6 -12 है, और ये है 6 to 8 और 18 26. So
26 minus 14, 12, sorry. That is FIUI, it will be 14. अब हमें स्टेप डेविएशन मेथड का ये जो फॉर्मूला है उसको याद करना। ये अज्यूम्ड मीन 162.5 हमने किया था, लिख दिया है यहाँ पे। Now write down the formula for the means assumed mean method, that is mean x bar is a plus h multiplied by total of FIUI upon total of FI. देखिए a is 162.5, right? H here is the class size, that is you take the difference of upper limit and lower limit of any class, that is 5. Total FI FUI, that is 14. And total of all frequencies, this is 25. इस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा. So in place of A you write 162.5 plus in place of H you write 5 into in place of total FIUI write 14 divided by total frequency is 25, you write here 25. You can calculate 162.5, 5 5s are 25, 14 by 5, that is 2.8. दोनों को ऐड करिए, that is 165.30. So what is mean height of the all the student present that day? Means all the total 25 student of the class present on a particular day. That is write the answer statement. So result is what? लिख दीजिए कि the mean height of the student of 125 student, that is what? Of my class is what? 165.30. I can write here 165.3 centimeter. That's all for this activity. That's all for this activity. You write in your lab manual, and that's good. So thank you. मैं BL शर्मा, मैथ्स सर. Take its screenshot. Thank you. Keep watching. All the best.